सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Good evening, ladies and gentlemen. We are here today to discuss a subject which is very dear to the heart of every Indian, and I think credit for that should go to our friend Dr. Husain, who made this offer to speak on this subject along with his colleagues. And as a result of that, we are here today to discuss the waterways on river Ganga, environmental challenges and opportunities. All of us have our own opinions on this subject. Informed or uninformed, mine is one of the uninformed ones, remain on that. But the subject is dear to everybody's heart and everybody wants to hear about it. Now, we all know that Ganga has got one of the largest basins in the country. It's about 1.2 million miles, and a very large population of India lives in this, and lived in it from very inception of our civilization. And 1/3 of Bangladesh and almost 60, 70, 80% of Nepal, which the population lives in this area. And their subsistence of bulk of the people is on the agriculture, and for the foreseeable future, perhaps that is going to remain the main source of their earning. The condition of the agriculture as to whether there are 60% population or 67% population of the country is surviving on 17 to 18% of the GDP itself speaks poorly of the country as such. But more than that, in this particular area, the condition is even worse because a very large percentage of that population is below poverty line, and that's almost 30%. So we have to look at this area very seriously. Now, we all have called Ganga as the lifeline of Bharat, as it was called in the olden days. And the mention of Ganga is there in all our religious scriptures of any kind. It must appear in some form or the other there, because it had a huge contribution to make in our daily life and in very survival. But whereas we have called Ganga the mother of India in its own form, have we cared for the Ganges on our side? I don't think so. निवारिणी जाह्नवी कन्ये कलुष विनाशिनी महिमा
तो जैसा मैंने कहा क्या है आज जैसे एवरीबॉडी वाज अनकंफर्टेबल हिंदी में चलेगा तो अभी इस हॉल में बहुत सारे विद्वान ऐसे बैठे हैं जो गंगा के बारे में से कहने से चाहते हैं, जो इस ताकि साहब के सामने रखे। मैं गंगा के बोल रहे हैं तो ताकत रखा है। ओके, थैंक यू। सो मैं गंगा एक्टिविस्ट हूँ और एक्टिविस्ट की एक निष्ठा होती है कि थोड़ा वन साइडेड व्यू लेता है, तो मेरी प्रेजेंटेशन में भी आपको वन साइडेड व्यू मिलेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं लेकिन करेक्ट मी लेटर ऑन। और मुख्य जो प्रस्तुति है वो हिश्मी साहब की है वाटरवेज के ऊपर, और ये हमारी सहमति हुई थी कि थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू जो अभी गंगा के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसका एक मिल जाए। तो मेरा जो है प्रस्तुति परिचयात्मक ज़्यादा है, उसमें एक दो बातों के ऊपर मैं हमर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इस समय पे जो गंगा के ऊपर अधिक हो रही है वो पोल्यूशन जो हो रहा है, खासतौर से शहर के डोमेस्टिक सीवर से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, तो उसके ऊपर गंगा की जो समस्या उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी है। और इस सीमित समय में उसको मैं परिचय के रूप में भी रख सकता हूँ। तो समय क्योंकि सीमित है, तो अगर बीच में कहीं पे मेरा समय खत्म नहीं होगा तो वहीं पे रुक जाऊंगा, फिर लेटर ऑन देंगे। ये जो फिलॉसफी का मैंने शुरू में रखा है, इसको सबसे ज़्यादा समझना जरूरी, क्योंकि ये जो स्तोत्र मैंने आपके सामने सुनवाया, इस स्तोत्र को समझ के ही हम ये जान सकते हैं कि गंगा को शुद्धि की इस देश में इतनी ज़्यादा मांग क्यों है। और अगर गंगा को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो ये भाव हमने क्योंकि त्याग दिया है, इसलिए हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और इस भाव को हमारे अंदर फिर से आ जाएगा तो शायद गंगा भी हम ठीक कर लेंगे। ये आप यू आर ए वेरी ऑगस्ट ऑडियंस, मैं बड़ी हम्बली आपके सामने इस निवेदन को कर रहा हूँ। मेरा प्रस्तुति तो यही है। तो एक आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नेचर को बिल्कुल टच मत करिए। सो ये जो डीप इकोलॉजी वाली फिलॉसफी है, मैं उसको बिलोंग करता हूँ। हमको नेचर से छेड़छाड़ करने को अधिकार नहीं। लेकिन कुछ लोग, मैं किसी निंदा के स्वर में नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मानना है कि ये एनवायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं ये विकास को रोकते हैं और जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका हमें अधिकतम प्रयोग करना चाहिए मनुष्य के विकास के लिए। ये एक दूसरा थॉट है, कुल मिला के आज ये डोमिनेट करता है विदाउट सेइंग इट इज रॉन्ग। अब एक और तो इसलिए इसमें ये भी निहित है कि जितना भी पानी जा रहा है उसको समुद्र में जाने से हम दे रहे हैं तो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, और हमें एक भी बूंद पानी समुद्र में नहीं जाना चाहिए, सारा उसका प्रयोग करना चाहिए। और पिछले 4-5 साल से जब मैं डिबेट में इन्वॉल्व हुआ तो बहुत सारे सीनियर लोगों ने कहा कि हम 60 साल से यही सोचते रहे, अब हमको एहसास हुआ कि हमारी कितनी बड़ी गलती थी। और नदी के पानी का ऊपर अधिकार सबसे पहले समुद्र का है और हम लोगों का अधिकार पाते हैं। ये एक दूसरा व्यू पॉइंट है। तीसरा जिसको कि शायद हमारे हिस्ट्री साहब रिप्रेजेंट करते हैं कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, कि आप नदी को प्रिजर्व भी करिए और सस्टेनेबली यूज भी करिए। तो वो आप अपने तरीके से नेक्स्ट ये स्तोत्रम आपने सुनी किया है। इसमें जो खास लाइन एक आती है कि पाप नाशिनी इसको कहा गया है, गंगा को पाप नाशिनी कहा गया है। पर आज उस चर्चा का विषय नहीं है, जब तक हम इसको ग्रैस्प नहीं करेंगे तब तक हम गंगा के मामले में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब वैसे आप लोग सभी लोग परिचित ही होंगे, लेकिन आमतौर से जो गंगा की चर्चा होती है उसमें हिमालय से जो गंगा निकलती है उसके ऊपर चर्चा ज़्यादा केंद्रित रहती है। लेकिन हिमालय से लेकर समुद्र तक अनेकों नदियाँ गंगा में आके मिलती हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हमको परिचय रहना चाहिए। पूरी गंगा का थोड़ा दिखाया है, और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये इतना बड़ा बेसिन है, तो जनरली हमारी को एज मेडिकल स्टूडेंट को ये सब बताया नहीं गया। इवन इन ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को भी इतना नहीं बताया जाता। जो टीचिंग ऑफ रिवर्स ऑफ दिस कंट्री है कि कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण जा रही है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर आ रही है, कौन सी पूर्व से पश्चिम जा रही है, कौन सी पश्चिम से पूर्व आ रही है। ये जो इस देश का इतना विशाल नदियों का जाल बिछा हुआ है, इसकी कोई समझ एक एवरेज स्टूडेंट को नहीं दी जाती फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये हिमालय में क्योंकि चर्चा है कि ये अपना भगीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये ज्यादातर चर्चा का मुद्दा रहे हैं। और
यहाँ पे हमको ये बात समझनी कि जो सदा नीरा गंगा नदी है, इसमें जो गढ़वाल के इलाके की समस्या अलग है, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और डैम्स की समस्या है। उसके बाद हरिद्वार से वाराणसी तक फ्लो की समस्या है, मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो और पोल्यूशन की समस्या है। और उसके बाद वाराणसी से फरक्का बैरेज तक हमारे सामने सिल्टेशन और फ्लड्स की समस्या है। तो देश के 3 अलग अलग इलाकों में अलग अलग समस्या है और तीनों के ऊपर एक साथ को विचार करना पड़ेगा। इसमें सर टाइम मेरे को बता दीजिएगा तो पड़ेगा हो जाएगा। तो इसके बारे में दूसरी हमारी सीमा ये है कि ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार से सीक्वेंशियली गंगा को हमने डिस्ट्रॉय किया, ये चर्चा में बहुत कम बात आती है। और ये 19वीं सदी के शुरुआत से ही रेलवेज के बनने से के लिए जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हुआ हिमालय में, वहां से ये कहानी शुरू हो जाती है। और उसके बाद ब्रिटिश का एक इंपीरियल कैनाल बिल्डिंग एंटरप्राइज था। प्रोबे कोटले इज द फेमस मैन, जिसने कि पहले ईस्टर्न यमुना कैनाल बनाने में काम किया, उसके बाद वेस्टर्न यमुना कैनाल बनाई। And again, he had great justification of building this canal, but the canal building started from there. और पानी को साइफन ऑफ कर लिएगा, तो we just need to remember that. Now there are issues कि इसकी इतनी जरूरत थी या नहीं थी, और ये अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल सब बनी, वेस्टर्न यमुना कैनाल इज नॉट रिलेटेड टू यमुना रिवर एक्सेट्रा। तो इसके बाद जो है आइडिया ये था कि कैनाल्स बनेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन ये कैनाल्स बनती गई तो भी ब्रिटिश के टाइम में फेमस बने। और ये कैनाल का एक पर्पस ये भी था कि नेविगेशन के लिए यूज होगी, पर नेविगेशन के लिए कभी यूज नहीं हुई। एपिडेमिक्स, डिजास्टर सब होते रहे उनके समय में। तो स्टोरी जो ब्रिटिश के टाइम में जो स्टोरी थी, वी शुड रिमेंबर। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बहुत बड़ा एजुकेशन किया और उन्होंने कहा कि कम से कम हर की पौड़ी पे जो अविरल धारा है वो बनी रहनी चाहिए। उस समय पर he had this unique feat कि ब्रिटिश सरकार को झुका के उन्होंने कुछ समझौता करवा लिया था। These are important landmarks in understanding of the story of Ganga. तो अब जो इंडिपेंडेंट इंडिया में instead of restraining our diversion of water from the Ganges river, we increased that. तो जो प्रोबे कोटले का डिजाइन था अपर गंगा कैनाल का, उसको चेंज करके आपने अधिक पानी जो है गंगा से निकालना शुरू कर दिया। और इस समय पे ये कहा जाता है वाराणसी में कि केवल 10% या कम पानी जो है वो हिमालय का पानी वाराणसी तक पहुंचता है, क्योंकि और भी कई जगह में पानी निकाल दिया। और फिर कोसी में डैम बना फ्लड कंट्रोल के लिए, तो वहां पे बैरेजेस बने, एम्बैंकमेंट्स बने, उसकी जो समस्याएं हैं उसके वो सब आपके सामने है। Now somewhere we started realizing the problem in 1970. We made this famous water pollution law in 1970, और राजीव गांधी जी के नेतृत्व में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुई, निर्मल गंगा for controlling the pollution. Mr. MC Mehta, filed a case in Kanpur against the tanneries. So the tannery thing, industrial pollution, was not part of the Ganga action plan, but he brought that into the picture. And एक ही डैम बना। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं वाराणसी में पानी बहुत कम हो गया है। Thank you very much, Dr. Mittal. I think you are marvelous, and in very brief time, I think you put across a lot of material, and there would be exposed lots of questions on these issues later. So we move on to the next part, that is Dr. Husain, who will cover his part of the presentation. First of all, I would like to thank to VIF giving me the opportunity to develop this program. I am feeling that it is a matter of pride for me that I am able to share some of the thoughts, going to present some of the things which essentially required. I also thank to General Vij and Lieutenant General Sahani for his continuous support to give ideas, and I put something together. You have seen very clearly what the Dr. Mittal has shared, and in the beginning we have seen that Ganga is not just a river, it is the mother river by the nation, it is declared the national river, and it is having a challenge of conserving it, protection. The pollution is one of the major issues, the industrialization is another issue,
And overall, if we see the climate is changing, how the climatic factors are impacting overall the Ganga. Globally, the rivers are impacting or affecting. So before coming on my thoughts, I would like to tell that globally it has studied that the waterways are the more environment friendly because they are less polluted, they are more safer. So there are a lot of research globally has happened in America and Europe. So many places there are studies are available. If you like the details, I definitely share with you. The economics is also very important. You can see that the transportation cost, because I am talking about in such economic and the figures, what generally driven the economy, what driven the decisions when we talk something as an economy or a business. So if you want to conserve the environment, if you want to conserve the dolphins, we definitely need money. We need someone to invest on the conservation of the dolphins. So until we are not able to save the money, with empty bellies, we cannot think about conservation. That's why I put these thoughts that how the challenge with the COP21, that how we can reduce our carbon footprint. So these waterways definitely will help if we will make them in a way where a proper stakeholder engagement will be there, proper dialogue will be there, and to address a problem is also very important. So I will talk briefly about the element of sustainability. You all know that the economical, social, and the environmental aspect. Some of the component of the waterways. I generally talk the component because if we know the component, then we will think in our back of mind that really the waterways are dangerous for the Ganga or it will help to conserve it. There is a long debate. There are two schools of thought. One is saying that Ganga is going to die if you will make the waterway. But historically we know the Ganga has been used in the waterways. Until the mid of the 20th century it was used. But the reason, the less water. I will talk about what are the other waterways by the government who has declared 101 waterways by a bill. So there is a lot of support by the government, there is a lot of fund is available, only there is a need to understand and to execute this program in a fashion which is more sustainable. There are challenges, the major challenges because we know the water flow is one of the issues as Dr. Mittal already indicated. So we have to work with the nature and nature is our mother. So we cannot bargain with the nature, but we can go in the nature and get their support to develop the nation. And I will also talk some of very brief for sustainable mitigation. What are the issues? If we feel that the vessels and the construction will impact it, so similarly there are the engineering design which could help us how we can conserve. Technical failure. It is one of my degrees. I did my MBA in e-governance, on which I did the policy that if this fails, how we can support it. So you can see these are the three, all the time when people talking about the sustainability. So the first question, the social, the people, the culture, the religion. So religiously, and we are very much motivated to conserve the Ganga because it is our holy river. We don't want to die in a dirty drain. The economics is there, as Dr. Mittal, and there are reports that a big amount, $3 billion is available for developing it. So the environment is really a challenge. The ecological flow, for which we are talking, that how much the ecological flow, and the ecological flow could be achieved if we have it designed in such a way that you realize that ecological flow is something, if we are having a water, then we can swim in it. So the four components, the ecology, water, economy, and the navigation. So without water, you cannot think about the ecology. Without ecology, you cannot think about the economy because in the Ganges, the economy is the fish culture or catching the fishes. And if we are having a combination of these three, then we will having a navigation. So these are the four components of the waterways. So this is if we are having a balancing situation between all these four, then we definitely able to deliver what the government is thinking, what the
authority is thinking to make it. Just briefly, I will talk about some of the the government of India has declared 5 national waterways. So I will talk about the more in detail about the national waterway one, which is on the river Ganga. It is the longest one and the most oldest. In 1986, the government has declared. Almost 30 years has been passed, and still we are working on where we will put few more structures. We are having a design, but still the engineering design is not so much foolproof. There is a lot of criticism by the ecologists that you are just killing the dolphins. So the small, you can see the waterway number 2 is again on the river Brahmaputra. The 4, 3 and 5, these are on the canals. So these are on the canals, so there are not so much issue in terms of ecology. But in terms of ecology and the ecosystem and the environmental challenges, the waterway number 1 is the most important, the crucial. The other important thing about you can see in the picture, the waterway. So we are talking that there is a lack of water, there is the least available drought is not available. But you can see that physiologically or talent-wise, there are 7 rivers are merging on these points from Allahabad to Haldia. So I believe, and some of more understanding need to do when we see the droughts, we feel that we are just lack of water. But when the floods are happening now, you can read in the newspaper, people are dying with lot of water. So only need to manage the water in such a way that our ecosystem is not going to be impacted, or our resources should be managed in such a way. There is a problem of silting, so there is a silting management plan which can be managed. So some of the things I talked to, so early 20th century it was used. Since 2003, again the government has taken initiative and some of the transportation has increased. Then we got about 20 minutes for the questions and answers. So kindly pose your question. You've had 2 very good presentations which have given us a pretty good insight into the problem areas and how they are conflicted over 10 years now. And he would be able to say a few words on that. I think, should we start some suggestion or question from you? And then we go on to the others. Since you are here, we better not miss that opportunity. Well, I think I must congratulate Dr. Husain and Dr. Mittal for a wonderful presentation. I wish, Dr. Mittal, you had, you spent a little bit more time on the historical other aspects, you see. Because I think that is something which is missing from our psyche, our understanding. But more looking at it from industrial and pollution and economic angles, and its importance in our civilization, in our culture, very existence, that we have had based on Ganges. I don't know for how long, centuries or maybe much more than that, you see. So that is something, I think you said a very important point, that that is missing and that needs to be, people need to be reminded, we need to be reminded, what Ganga is to us. General Viz said right in the beginning that we say माँ गंगे, लेकिन वो माँ जो है उसको उसी का हम इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, माँ से माँ ने तो हमको सब कुछ दिया, लेकिन हम माँ से बहुत कुछ और जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ले करके सर वो बैलेंस जो है वो टोटली गड़बड़ा रहा है। तो सर अभी तो सर इतना ही कोसी पर जो 2008 में हुआ, so that was a different story. That actually happened because of the mismanagement and because the embankment that breached. It was a very unusual kind of flood, you see. That is not a regular kind of flood. But here the subject is different. Yes. But thank you very much. I think it's wonderful listening to what you. Thank you. Any questions? Yes, please. I come to you. I would also like to join in congratulating both these speakers. And I have only one question each to them.
Dr. Mittal, there is a lot of hype about public participation. As an activist, would you like to comment whether that public participation is sought properly and utilized once it is offered? And to you, Dr. Husain, my compliments that you presented the government side so well. But when you come to a place like that and you are known as a good scientist, can you also make a scientific analysis that the transportation by inland navigation is cheaper than other modes of transportation, is acceptable, well admitted, because energy losses are much less. But what about other losses? When you take transportation cost, what are the factors that you already taken? Is it only energy, or do you take environmental costs also? What are social costs? What other costs do you take into consideration? So, from now later ये जो परिचय त्यागी साहब ने कहा है, तो आजकल मैं एक तरीके से बहुत समय से अर्बन गवर्नेंस के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। जब पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की जाती है तो इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो मैं अपना आपको अभिप्राय पहले बताता हूँ कि ये जो डिक्लाइन ऑफ गवर्नेंस है, कि पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी कमजोर हो गई है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप भी कमजोर हो गई है, तो नाउ वी नीड एक्टिव सिटीजन. So active citizen should work with the bureaucratic side and political side to make the government happen. तो इसके लिए हमने कानपुर में थोड़ा प्रयास किया था, we made a kind of Ganga alliance, लेकिन म्युनिसिपल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से हमको कोई स्थान टेबल पे मिला नहीं। दिल्ली में भी हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये हो सकता है हमारे हिसाब से, क्योंकि we have to make the existing system work, और वो एक्टिव सिटीजन से हो सकता है। एक्टिव सिटीजन राइट नाउ इज नॉट वेलकम, सो वी आर ट्राइंग, वंस इट हैपेंस लॉट ऑफ थिंग्स विल इम्प्रूव। इतना ही मैं कहता हूँ। Thank you. Regarding the cost, what the analysis has been done, it is done on the basis of the initial shipment from a point to the by train or by a ship. So the indirect cost, as you are saying, environmental cost, so still we are having a debate that how much cost we fix for the environment damaged by a mining company, or what the carbon has been emitted. So in that we have put a factor in which some of the cost which not directly coming, but that cost has been reflecting in terms of transportation or getting a proper figure. Okay. The next, yeah, Sir, I have a large number of questions, but I will be very brief. First issue is that there is, I believe, a law that no construction is to be permitted along these river beds up to 150 meters or so. If you visit Badrinath, the hotels particularly are bang on the river bank, and everything that they throw comes into the river. Now, the second issue is, if we are sentimental about Ganga, I am sorry, then you cannot look at waterways and all these kinds of commercial ventures, because puja ka jagah jo hai wo alag hi hota hai. So let us be very clear. Are we talking of a river as a natural resource to sustain the citizens and the population and the men of this country as a drinkable water, potable water, or whatever else we are talking of, or we are going to commercially exploit it? We are a peninsula. There is enough waterways in terms of our transportation of goods from west coast to east coast and all that is available, which can decongest the roads as much as we can. As far as the river is concerned, it can be used as a clean, fresh water for sustenance. The next point is encroachments. As the water is reducing in the rivers, we find huge amount of encroachments that come out, and nobody does anything about it. Nobody does anything about it. And last point is the amount of water or the sewage which is being drained into these rivers. They have become like a mainstay of the urban development's sewage going into the river and making it like an alarm. Yamuna is the example in Delhi. And I do not understand why a ruling cannot be given by the government which can be effected immediately, no public party, public-private participation, etc. Right into whatever goes into the river cannot be a
sewage water. Just put the plant there at number of places, and those people who are putting the sewage here, they will contribute to this. One example, like you said, you worked in Kharpur, the tanneries water which after cleaning the leather that goes into the river, why those tanneries cannot be penalized, or the funds can be collected from them to make sure that the water which they throw out is a clean water into the river. I don't understand this. The basic problem probably is the center-state relationship and collective commitment to make sure that we drain only the fresh water into the river and not the polluted water. Where we picked up the water from there was fresh, only fresh water must go into it, and that is what is required. I don't think much policies are required on this. Thank you. I think these are more of suggestions. The questions, we will skip the answers. Yeah. Yes, ma'am. So I must congratulate both the speakers. मेरा पहला question is to Dr. Mittal. You talked about the PIF at the time of Kumbh in Allahabad. So I just want to know how much, what the court said and how much it was followed by the various agencies. And another thing, what Dr. Husain said, that we are religiously motivated to clean. But I think we are religiously motivated to pollute the rivers. जितना घर का सामान होता है पूजा का निकल के, मैंने अपने साथ में बहुत अच्छे पढ़े लिखे सब ले जाकर वो नदी में फेंक के आते हैं. Why don't we stop and we start at our level? You know, it is the first step if you can do it. And why we are not strict about it? Please. अच्छा, जो मैडम आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहा, तो उन्होंने सबसे पहला सवाल तो स्टेट गवर्नमेंट से ये किया कि आप रिवर से इतना पानी कैसे निकाल सकते हैं कि रिवर में पानी ना रहे. उसके लिए आप शायद परिस्थिति होगी कि अपना जो है गंगा नहर से शुरू करके उसके बाद भी लगातार पानी निकाला जाता है. तो प्रैक्टिकली दूसरी जो रिवर्स आ रही है वो जाके भी पानी डालती है, इलाहाबाद तक आते आते यमुना का पानी वहाँ पहुँचता है, गंगा का पानी सारा निकाल लेती है. इन एनी केस क्योंकि इतना प्रेशर था पब्लिक का कि कुंभ के समय में पानी मिलना चाहिए, तो प्रैक्टिकली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बिकेम द कोऑर्डिनेशन पॉइंट जहाँ पे वो सबको आदेश करा था आप ये करिए आप ये करिए. उसके कारण से हुआ कि कुंभ संभव हो गया. लेकिन उनके जो बाकी जो निर्देश थे वो तो सब वहीं पे हैं जैसे कि सारी समस्या बनी. बट दे प्लेड दैट पिवटल रोल इन इंश्योरिंग कि जो काम स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए कोऑर्डिनेटिंग एवरी एजेंसीज, वो खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया. अब जो दूसरा पॉइंट आपने कहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है. हमारे गोपीचंद प्रकाश जी हमारे साथ बैठे हैं, 15 साल से अपनी योजना लेके हर जगह पे जा रहे हैं. बिल्कुल ये मीटिंग के बाद आपसे मिलेंगे. ये वेरी इंटरेस्टिंग प्लान पुष्पांजलि कलश कि कलश में अलग पूजा सामग्री को इकट्ठा किया जाए, तो इनकी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई है. 15 साल से सन्यासी की तरह से लगे हुए हैं. Anyway, that's a different point, but he will put his. I will say one more thing about it. कि on one side we keep telling the people not to pollute. On the other side, we invite the people from all over the world at the bank of the, whether it is Husain, whether it is Allahabad. See, I'm not going for any mudda or any kind of things. बचपन से हम देखते आ रहे हैं, मैं इलाहाबाद की हूँ, संगम पे रोज जाना होता था कि हमारी नदी साफ दिखनी चाहिए. मैं जब अंडमान निकोबार गई या मैं किसी और जगह गई, वहाँ का साफ पानी देख के मुझे आज भी बहुत कोफ्त होती है, अंदर तक होती है कि वहाँ पे आप डिस्कवरी चैनल की तरह यू कैन सी द बॉटम ऑफ द सी. व्हाई कांट वी डू सेम थिंग इन इलाहाबाद? So this is not a question of any Buddha and anything. We have to strictly follow that and we are mature enough कि इतनी सारी प्रतिमा ले जाकर हम गंगा में डाल देते हैं. हम एक प्रतिमा की वो सिंबॉलिक इमोशन कर सकते हैं. We are I think mature enough to do that. Thank you. Yeah, you had a question. I'll come to you. Yes, please. My question is addressed to Dr. Mittal. How is the idea of raising a river protection force, Central River Protection Force? I believe without certain degree of policing, none of these measures are going to be completely successful. ये जो रिवर प्रोटेक्शन फोर्स है, ये खास तौर से मेरी जानकारी में हरिद्वार में कुछ संत है उसको काफी जोर से कह रहे हैं. अब अपने आप में इसमें कोई बुराई नहीं है. दिस रिवर्स ना जो लोग इधर उधर से उसमें पूरा फेंक देते हैं, वो तो म्यूनिसिपैलिटी की प्रॉब्लम है. म्यूनिसिपैलिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपना करेगी तो इट कैन बी ए पार्ट सिंबॉलिक गेस्चर. पर मैं निजी तौर से इसमें कोई ज़्यादा सब्सटेंस विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर सेइंग इट, मैं उसमें नहीं देखता. इट इज इग्नोरिंग द मेन प्रॉब्लम. Okay.
You first. At the outset, I would like to congratulate both the speakers. Thank you. I'm Vikram. As an individual and tax-paying citizen of India, I would like to ask you one question, Dr. Mittal. You mentioned about cleaning drive for gadgets. This drive was started and the World Bank sanctioned 3 billion. Why this drive stopped and the work stands still and not progressing further? Is it because of some bottlenecks in the system? I would like to know about it. Thank you. जी 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 इस सवाल का शायद ज़्यादा कम्पिटेंटली उत्तर शायद त्यागी साहब दे सके, लेकिन जो मेरी समझ है वो ये है कि ये जो जहाँ पे भी STPs बनने हैं, एज्यूमिंग कि जो टेक्निकल इंटरवेंशन इन्होंने सजेस्ट किया वो ठीक है, मेरे को उसके बारे में बहुत शुभा है, पर मैं उस पर नहीं जा रहा। जो भी तय किया उसको इम्प्लीमेंट करें, तो जो उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को वो भी दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने उस काम को करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा देना है, वर्ल्ड बैंक ने पैसा प्रोवाइड करना है। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये हो नहीं पा रहा है किसी तरीके से। इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल प्रॉब्लम, इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ इंटर ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम, ब्यूरोक्रेसी टेक्नोक्रेसी प्रॉब्लम। हमारा जो सिस्टम थोड़ा सा डिस्फंक्शनल हो गया है उसकी समस्या है। बट मनी इज अवेलेबल विद द वर्ल्ड बैंक, 3 बिलियन इज अ लॉट ऑफ थिंग। यही है संक्षेप में। I would like to once again come to you, sir. There's a somebody who raised here, please. थैंक यू डॉक्टर मित्तल, थैंक यू हिश्मी साहब, आप लोगों ने बहुत लाइटन बातें वाटरवेज के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। डॉक्टर मित्तल और आप दोनों लोगों से एक एक सवाल, छोटा छोटा सवाल। अपनी बात कहते हुए मैं अपनी बात का सवाल भी कर रहा हूँ। पिछले 60-70 सालों में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ में रिवर को एक छोटा सा राइट, रिवर के साथ किनारे रहने वाले, मैं कानपुर का हूँ, मैं भी गंगा किनारे रहता हूँ, मेरे घर से 7 किलोमीटर है गंगा। नदी के किनारे रहने वाले के लिए एक राइट है कि वो आप अगर उसका पानी पोल्यूट करते हैं, मेरे कुएं का पानी, मेरे नदी का पानी आप पोल्यूट करते हैं, तो इट इज क्रिमिनल ऑफेंस। हाउ मेनी केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड टू द इंडस्ट्रीज, ट्रेनर्स, जो भी आप लोग बहुत सारी बात कर रहे थे, शायद मेरे हिसाब से मतलब वेरी फ्यू ऑफ देम हैव बीन रजिस्टर्ड टिल नाउ। अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस था तो अब तक करेक्टिव मैकेनिज्म क्यों नहीं लिया? दूसरा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहरा है? पब्लिक पार्टिसिपेशन तक हर बात पब्लिक पार्टिसिपेशन तक आ जाती है। इज इट नॉट नेसेसरली कि जो अभी तक प्रैक्टिसेस हैं, आज तक की जो आपने बहुत सारी तरक्की कर ली है, बहुत सारा डेवलपमेंट, वाटरवेज, आज वाटरवेज तक पहुंचे हैं हम लोग, अभी तक फ्लो मेंटेन नहीं कर पाए हैं, और अब तक जो गंगा और रिवर्स फ्लड और थर्मल पावर प्लांट्स, अलग अलग पावर प्लांट्स बना करके बहुत सारे पावर प्लांट्स बनाए, दिल्ली की आपने खुद बात की, तो वहां तक का डेवलपमेंट करने के बाद हमारी आज नदियों की हालत यहाँ तक पहुंच गई, और अब हम वाटरवेज बनाने के नाम पे नदी को साफ करने की कोशिश और कर रहे हैं। अब आपने कहा कि फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाए, फ्लो और मेंटेन हो जाएगा तो वाटरवेज चालू हो जाएगा। तो डेवलपमेंट इज द ओनली क्राइटेरिया कि हम नदी को साफ करने वाले हैं, अदरवाइज वो माँ गंगे ने बुलाया, बनारस में मोदी जी ने कहा था कि उसका भी कुछ बीच में है। और क्या गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल, आज तक की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रही है, करप्ट ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल नहीं रही है, जो भी बहुत सारी एजेंसीज, आपने कहा कि फेल्योर ऑफ दैट एजेंसी दैट हैव बीन मेड गंगा एक्शन प्लान, तो अब तक की प्रैक्टिसेस और अब जो नई प्रैक्टिसेस हैं, नमामि गंगे अनदर अथॉरिटी हैज बीन मेड, हैज बीन फाउंडेड, तो अभी जो करेक्टिव मैकेनिज्म है वो कौन सी ली गई हैं, अब जो एजेंसीज बनी हैं, और हिश्मी साहब वाटरवेज बनाने के लिए गंगा साफ की जा रही है कि गंगा साफ करने का किसी का इरादा नहीं? Thank you. We start with Dr. So, आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसको हिंदी में जवाब दूंगा क्योंकि हिंदी में पूछा है। डेवलपमेंट से अगर आप गंगा को साफ करने का जोड़ रहे हैं तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि गंगा को साफ करने के लिए काफ़ी पैसा आया, गंगा एक्शन प्लान 1 आया, एक्शन प्लान 2 आया, अग्रल गंगा आई, अब नमामि गंगे हम लोग काम कर रहे हैं। इन चारों चीज़ों में जब हम देखते हैं तो हम लोगों ने STP तो लगा दिए, लेकिन उनके लिए पावर सप्लाई नहीं थी, उनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था। तो क्या हुआ, जो STP हमारे बने, हमारा गंदा पानी तो बढ़ता गया क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उस जनसंख्या को मेंटेन करने के से जो पॉल्यूशन था उसके लिए हमारे पास प्लान नहीं था।
तो क्योंकि मेरी बात आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देगी, दूसरी तरफ जा रही है, तो मैं उस क्वेश्चन उसके जवाब पर आता हूँ। वाटरवेज ग्लोबली बहुत सारी नदियों पे बहुत सारी जगह वाटर फ्रंट कहा जाता है। शहर के बाहर एक अच्छी सी आप जगह जहाँ पे पानी है, जैसे आप 7 किलोमीटर दूर रहते हैं, अगर वहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट बन जाता, जैसा कि आप अभी हम अगर गुड़गांव में जाते हैं तो जाके कई हज़ार रुपए का टिकट खरीद कर एक वाटर स्पोर्ट पार्क में जाते हैं। मैं सिंगापुर में जाता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट है। जिन जिन नदियों के किनारे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ग्लोबली घूमने के बाद और अपनी रिसर्च करने के बाद, अगर हम उसको इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब यही नहीं कि हम उसको दोहन करते हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं गंगा ने बहुत